So, chalo, good evening, all of you. Let us start with the lecture. Yes, good evening, all of you. Okay, chalo, last time yes, so last time हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में देखा था, करेक्ट है? और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. सो अभी आज के लेक्चर में हमको उसके आगे का जो कंसेप्ट है वो देखना है. सो लास्ट लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स देखा था, बराबर है? So means if a vector is to be resolved into two components, then how it can be done? We have seen it in the last lecture. But now in this lecture, here we are going to see the resolution of a vector in three components. See here, the resolution of vector into three components. Okay, they are called as the rectangular components. Okay, so in this way, resolution of vector in three components. So अभी देखो क्या होता है कि अगर सपोज हम एक एक्स एक्सिस ले लेंगे. अभी जैसे कि नॉर्मली जो प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो ही एक्सिस होते हैं. एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, बस, नो डाउट. इसलिए इनके जो यूनिट वेक्टर्स है तो वो भी हम दो ही ले लेते हैं. एक होता है आई बार और दूसरा है जे बार, करेक्ट है? So this I bar and j bar, these are the two unit vectors which are along x axis and y axis, no doubt. Here, in case of three-dimensional system, there are three different axes which are perpendicular to each other. Okay, one is called as x axis, the other one is called as y axis, and the third one is supposed to be z axis, right? तो ये तीन इस तरह से तीन एक्सिस होते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी वेक्टर जो है, तो अगर सपोज एक वेक्टर हमारे पास जो स्पेस में है बीच में किधर भी, सो इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक दिस. सो देखो अगर ये एक वेक्टर है बीच में है सपोज वो, तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स जो है इस पॉइंट P के वो सपोज है x, y, z. ओके, so this vector can actually be resolved into three components instead of two, because see, if we drop a perpendicular from this vector on x axis, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि ये जो इस वेक्टर का जो एंगल बनता है x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा. तो ये देखो, द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर with x axis here is called as alpha. Okay, and this angle made by this vector with the y axis here is actually called as beta. Okay, and third one is the angle made by the same vector with this z axis here will be actually called as gamma, right? So this alpha, beta and gamma are the three angles made by this vector with the three different axes, which are mutually perpendicular to each other, x, y and z axis respectively. So here these angles alpha, beta and gamma are called as direction angles of that vector. Remember, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स. ठीक है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स मतलब क्या? अल्फा, बीटा एंड गामा. व्हाट आर डायरेक्शन एंगल्स? एक्चुअली दे आर द एंगल्स मेड बाय द vector with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively. Okay, now we'll see if suppose this P is the point whose coordinates are given to be x, y, z, then if we drop a perpendicular from this point P on this x axis here, then this part will actually be called as the resolved part of this P along x axis, and we can call it as px. करेक्ट है, इसको हम px बोल देंगे. ठीक है, in the same way here, if we drop a perpendicular from this vector p bar on the y axis here, then this will be called as a, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे resolved part of this vector along y axis, and it will be actually denoted by
py, okay, py, and this third one is, अब इसको दिखाना थोड़ा मुश्किल है थ्री डायमेंशनल में, कि p से अगर हम z एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो भी एक कंपोनेंट आएगा जो कि z एक्सिस के डायरेक्शन में रहेगा, जिसको हमको बोलना होगा pz, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी pz, नो डाउट. नाउ विल सी दैट इन दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, ये वाला ट्रायंगल देखो ठीक से, ओके, इफ यू सी द ट्रायंगल, यस, ये सपोज O पॉइंट है, ओरिजिन मतलब O, तो O P M ये ट्रायंगल अगर कंसीडर करते हो, ठीक है, इस पॉइंट को हम M नाम देके रखेंगे, चाहिए तो इसको चाहिए तो N नाम दे देंगे, इसको L नाम देते हैं, चलो ठीक है. तो अभी इसमें देखो क्या होता है कि इस ट्रायंगल के अंदर है ना, cos अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा बताओ. वी कैन से दैट द cos अल्फा विल एक्चुअली बी इक्वल टू, यस, cos अल्फा विल एक्चुअली बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड. इस ट्रायंगल के अंदर अल्फा का एडजेसेंट साइड कौन है, px है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, वो तो p है, बराबर. तो इसलिए यहाँ पे वो आ जाएगा px अपॉन p, दैट्स इट. सो दिस इज गोइंग टू बी दिस cos अल्फा. ओके, इन द सेम वे cos बीटा, हाउ मच इट विल बी इक्वल टू, तो देखो बीटा का इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो, कौन सा ट्रायंगल, ये देखो ओ पी एन, ये ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो ठीक से, तो हमको पता चलता है द cos of beta will be actually the adjacent side py upon the hypotenuse which is p here, so that we can get this as py upon p, right? And finally cos of gamma, in the same way we can get it as pz upon p, correct? So here this equation can be written, देखो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं आराम से कि px into px is equal to p cos अल्फा, करेक्ट है. ये हो गया इसका कन्वर्टेड फॉर्म. इसको मैं कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं py दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू p बीटा, बराबर. और तीसरा इसको भी कन्वर्ट करके वैसे ही लिख सकते हैं pz इज इक्वल टू p into cos gamma, करेक्ट है. So these are the three components, px, py and pz. These are called as the three components of the vector p bar, which are along x-axis, y-axis and z-axis. So what can we say? If px, py and pz are the three components of the vector p bar in terms of x, y, z, then we can say that this p bar is actually expressed as px into I bar plus py into j bar plus pz into k bar, ओके. तो ये p बार का एक्सप्रेशन हो गया. इसको ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्चुअली, p बार इज इक्वल टू, अच्छा px के बदले क्या आने वाला है, ये देखो px इज नथिंग बट p cos अल्फा, राइट. सो वी कैन जस्ट रिप्लेस इट बाय दैट एंड गेट दिस एज p cos अल्फा into I bar plus p cos beta into j bar plus p cos gamma into k bar, राइट है. तो ये बनते हैं components of this vector in the three directions, x axis, y axis and z axis respectively, ओके. तो अभी फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा. देखो अभी अगर ये बात हम यूज करेंगे कि मॉड ऑफ p बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी p, करेक्ट है. मॉड ऑफ p बार कितना होता है, p के बराबर होता है. तो इसके कारण यहाँ पे मॉड ऑफ p बार कैसे निकालते हैं वो हमको पता है ऑलरेडी. तो मॉड ऑफ p बार इज एक्चुअली इक्वल टू रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, and that should be equal to p, correct है. So if we equate this with p here, then here we can just simplify this further and replace this px, py and pz by the values of this px, which is p cos alpha, p cos beta and p cos gamma respectively, so that we can get this as p cos alpha ka whole square, right, plus here it is going to be p cos beta and the whole square as it is, plus here it is p cos gamma
and uska bhi whole square, which is actually going to be equal to p only. So if we square on both sides, then we can just simplify this further and get this as p square cos square alpha plus p square cos square beta plus p square cos square gamma, which is going to be actually equal to p square. And if we divide this whole equation by p square throughout, then this p square will get cancelled in each term, and what we are left with is simply, so see here, it is going to be cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. And this is actually going to be the relationship between this cos alpha, cos beta, and cos gamma as well. This cos alpha, cos beta, and cos gamma, these three numbers are actually called as direction cosines. Okay, इनको क्या बोलते हैं? Direction cosines. याद रखो ठीक से. What do you mean by direction cosines? Cos alpha, cos beta, and cos gamma, they are called as direction cosines. And what are these alpha, beta, gamma here? This alpha, beta, gamma are called as the direction angles. Okay, direction angles or direction cosines. These are the two different concepts. Remember correctly. So this is all about the direction cosines, and this is the relationship between this direction cosines, different direction cosines. तो इस रिलेशनशिप से क्या है ना कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा हमारे पास अगर है, if it is known, then we can find out gamma. Okay, gamma can be found out easily because all these three are just connected by this equation. Or beta and gamma is known, then we can just easily find out this alpha. अगर बीटा गैमा पता है तो उस केस में हम अल्फा निकाल सकते हैं आराम से, और अगर अल्फा और गैमा पता है तो बीटा निकाल सकते हैं. इन शॉर्ट, any two of them should be known, the third can be found out easily. So that is the use of this concept of direction cosines. Now we'll see. Yes, अभी देखो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन करके देखो कि सपोज एक वेक्टर makes angles suppose 45 degree, 60 degree and 60 degree with x, y, z axis respectively. Okay, so can you express it in terms of I bar, j bar and k bar? Yes, can do that. A vector makes an angles 45 degree, 60 degree and 60 degree with the positive directions of x axis, y axis and z axis respectively. मतलब ये कौन हो गया? ये जो 45 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री ये है, ये क्या हो गया? डायरेक्शन एंगल्स हो गए, है कि नहीं? That means direction angles are given here. Alpha is going to be 45 degree, beta is given to be 60 degree and gamma is actually given to be 60 degree. करेक्ट है? एक्चुअली अल्फा और बीटा देने के बाद गैमा देने की जरूरत नहीं थी, है कि नहीं? क्योंकि अगर हम अल्फा बीटा दिया हुआ है तो गैमा आराम से निकाल सकते थे, है कि नहीं? लेकिन चलो ठीक है, दिया हुआ है तो अल्फा बीटा गैमा मिल गया. तो व्हाट इज cos alpha then? What is the expression for p bar then in terms of I bar, j bar, k bar? Already obviously अभी हमने just देखा कि p it is p cos. अच्छा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी देना जरूरी है ना. वेक्टर यहाँ पे लिखो ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके, 10 units. Yes, the vector of magnitude 10 units makes an angle 45 degree, 60 degree and 60 degree with x, y, z axis respectively. Then express it in terms of I bar, j bar, k bar. So what we can do is p bar can be written to be equal to p cos alpha into I bar, right? Plus here it is going to be p
cos beta into j bar, and finally it is p cos gamma into k bar. Okay, so we can express this vector just in terms of this I bar, j bar, k bar in this way. So it will be actually 10 into cos 45, right, into I bar as it is, plus here it is going to be 10 into cos 60 degree into j bar, right, plus here it is going to be 10 into cos 60 degree once again into k bar as it is, right. So if we just simplify this further, then p bar can actually be expressed as 10 into cos 45. How much it is? 1 by root 2 into I bar as it is. Plus here it is 10 into cos 60, which is nothing but 1 by 2 into j bar as it is. Plus here it is cos of 10 into again cos 60, which is 1 by 2 into k bar as it is, right? So that we can get this p bar to be actually equal to, अच्छा 10 by root 2 मतलब कितना, इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो वो बन जाएगा 10 root 2 upon 2, which will become 5 root 2 in the next step, and this will be 5 I bar plus, sorry, j bar plus 5 k bar kept as it is, and hence we can express this p bar in terms of I bar, j bar, k bar as 5 root 2 into I bar plus 5 j bar plus 5 k bar. If we take this p bar common, 5 common, then we can get this 5 outside, and what we are left inside, root 2 I bar plus j bar plus k bar. This is actually going to be the vector p bar in terms of I bar, j bar and k bar. Yes. So in this way we can find out the vector in terms of I bar, j bar, k bar. Okay. One more question. You can do it yourself. Find express a vector of magnitude 15 units which is equally inclined to all coordinate axes. Yes, this is a question. Okay, express a vector of magnitude 15 units which is equally inclined to coordinate axis. Yes, how we can get that? If suppose the vector is equally inclined to coordinate axis, what does it mean? It means alpha is equal to beta is equal to gamma, right है? अल्फा बीटा गैमा तीनों सेम है, मतलब अगर कोई वेक्टर ऐसा है जो तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल करता है तो ये अल्फा बीटा और गैमा तीनों सेम होंगे कि नहीं, जरूर, तो उसको ही बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड, राइट. सो इफ यू यूज दिस फैक्ट हियर देन अल्फा बीटा गैमा, लेकिन पता कोई भी नहीं है, तीनों भी हमको पता नहीं है, तो हाउ कैन फाइंड इट आउट? तो वो निकालने के लिए हम ये बात यूज करेंगे जिनके उनके बीच में जो कंडीशन है या रिलेशनशिप है, जो कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज एक्चुअली इक्वल टू 1, जिससे हमको मिलता है अभी अल्फा बीटा गैमा सेम है तो each one can be replaced by another, so we can just replace alpha for each of them, beta as well as gamma. तो यहाँ पे भी आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, क्या किया, बीटा के बदले अल्फा डाल दिया, इधर वापस cos स्क्वायर गैमा के बदले अल्फा डाल दिया, तो तीनों तरफ क्या आएगा, अल्फा आएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इट एक्चुअली बिकम्स 3 cos स्क्वायर अल्फा, करेक्ट है. सो दिस इज 3 cos स्क्वायर अल्फा व्हिच इज गोइंग टू बी एक्चुअली 1, जिससे हमको मिलता है cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, जिससे हमको मिलता है cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, करेक्ट है. तो चलो ठीक है, cos अल्फा तक का तो वैल्यू हमको मिल गया, नो डाउट, बट व्हाट अबाउट cos बीटा देन? So since cos alpha is going to be 1/√3, cos beta will also be equal to 1/√3.
and at the same time cos gamma is also going to be 1 by root 3, right है? And hence we can say तो cos अल्फा cos बीटा cos gamma मिल गया। अभी हमको p बार को एक्सप्रेस करना है, तो p बार को i बार j बार k बार के फॉर्म में, तो p बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p cos अल्फा into i bar plus p cos beta into j bar plus here it is p cos gamma into k bar. But here cos alpha, cos beta, cos gamma, all of them are same and that is 1 by root 3 and p is given to be 15. So देखो यहाँ पे ये 15 दिया हुआ है कि नहीं, तो वो 15 हमको यहाँ पे रिप्लेस करना है, जिससे हमको मिलता है 15 into 1 by root 3 into I bar, करेक्ट है, plus here it is again 15 into 1 by root 3 into j bar and finally it is 15 into 1 by root 3 again into k bar, correct है. So if we take this 15 by root 3 common, then we can get this simplified as, यहाँ पे लिखता हूँ उसका आंसर, तो ये देखो p bar can be actually written as 15 by root 3 can be taken common and what we are left inside is I bar plus j bar plus k bar, that's it. Even we can just simplify multiply this root 3 by root 3 here and divide also, इसको बोलते हैं rationalization. तो अगर इसका rationalization करेंगे तो हमको ऊपर में मिलेगा 15 root 3 and that is to be divided by 3, that is multiplied by I bar plus j bar plus k bar, which can also be written as p bar is equal to, अच्छा अभी 15 root 3 by 3 मतलब क्या बनता है, वो 5 root 3 बनता है. So we can write it as 5 root 3 into bracket I bar plus j bar plus k bar. So see here how simple it is. So in this way we can find out the expression of any vector in terms of I bar, j bar, k bar if its angles made by this vector with the x-axis, y-axis and z-axis are given. Remember, so these angles are called as direction angles and their cosines are called as direction cosines, and these direction cosines always satisfy this relationship, that is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. Remember, okay. ठीक है, ओके बाकी तुमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, dot product of two vectors, if we have the vector p bar and q bar which are inclined at an angle theta like this here, then we can get the dot product of these two vectors to be equal to simply p into q into cos theta, मतलब mod of magnitude of the first vector, magnitude of the second vector multiplied by cosine of angle between these two vectors. This is called as the actually dot product of these two vectors, correct है? And this dot product here actually signifies the projection actually product of one vector and the projection of other vector along that component. मतलब अभी देखो यहाँ पे ये सपोज p बार है, ठीक है, और ये q बार है, राइट. अभी सोचो इस q बार को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये p बार है, q बार को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट मतलब क्या, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं qx, जिसको हम बोलेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ q along x एक्सिस. सपोज दिस इज along x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है सपोज, ठीक है, और ये y एक्सिस है, तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, देखो if we resolve this q bar into components, then x component of that q bar will be qx only, and we already proved that qx is nothing but q into cos theta, याद है. तो इसलिए अगर यहाँ पे इस q cos theta को अगर हम qx बोल देते हैं, तो what can we say, p into qx,
राइट है। इस तरह से ये हमको पता चलता है कि द वेक्टर, the dot product of two vectors is just the product of one vector and the component of another vector along the first vector। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे समझो हमको p बार डॉट q बार को एक्सप्रेस करना है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, p इंटू कंपोनेंट ऑफ q along p, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। समझा ठीक से? What is p bar dot q bar actually? It is going to be p into component of q along p। तो इस तरह से ये हमको मिलता है। और इन द इवन वी कैन आल्सो से दिस अदर वे राउंड, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, p bar dot q bar will actually be equal to q into component of p along q, right? And because of that only we can just find out the component of any vector along any other direction। तो अगर इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हो, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि द कंपोनेंट ऑफ q बार along p बार के लिए क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, तो उसके लिए बनता है p बार डॉट q बार अपॉन p। p मतलब भी मॉड ऑफ p बार। समझा क्या ठीक से? ये बन गया फॉर्मूला फॉर कंपोनेंट ऑफ q बार along p बार। और कंपोनेंट का मतलब ही प्रोजेक्शन भी होता है, इसको ही हम प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन को हो या कंपोनेंट को हो, एक ही बात है वो। ठीक है, और दूसरा ये वाला जो फॉर्मूला है ये पूरा, इसको भी अगर हम सपोज थोड़ा इन्वर्ट करेंगे ना, तो हमको ये मिल पाएगा कि कंपोनेंट ऑफ p बार along q बार will actually be equal to p बार डॉट q बार अपॉन, अब यहाँ पे इस q बार को नीचे लेके जाना पड़ेगा उधर, तो जिससे वो बन जाएगा mod of q bar in the denominator। So this is mod of q bar here in the denominator। So these are the formulae for projection, or we can say component। component को हो या उसको projection भी बोल सकते हैं, no problem। ठीक है, तो projection और component of p bar along q bar will be p bar dot q bar upon mod of q bar। तो जिस डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट निकालना होता है वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है, ये दिख रहा है, चेक करो एक बार ठीक से। तो ये हमको याद रखना है अच्छी तरह से। ठीक है, so this is the first application of the dot product of two vectors। and one more thing is to remember here is that if dot product of two vectors p bar dot q bar is 0, then it compulsorily means that p bar is perpendicular to q bar। डॉट प्रोडक्ट का 0 होना मतलब ये दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होने के इक्विवेलेंट होता है। if the two vectors are perpendicular then their dot product will be 0, and if the dot product of two vectors is 0 then the two vectors will be perpendicular to each other, no doubt। so this happens, and also that here the p bar दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, तो वो अगर उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर अगर आ गया, here it is going to be mod of q bar into mod of p bar। so in that case we can say that the vectors p bar and q bar are just parallel to each other, remember। तो अगर उनका जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर अगर p बार डॉट q बार का वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल 0 है, और एंगल 0 होने का मतलब ही क्या है, दे आर जस्ट पैरेलल टू ईच अदर। बाकी सब प्रॉपर्टीज तो तुमको ऑलरेडी पता है, जैसा कि p बार डॉट q बार इज पॉजिटिव व्हेन द एंगल इज एक्यूट, एंड दिस p बार एंड q बार, p बार डॉट q बार इज नेगेटिव व्हेन द एंगल इज ऑब्ट्यूज greater than 90। if the angle is greater than 90 then the p bar dot q bar will be negative, and if suppose theta is matlab angle is less than 90, that means the dot product is going to be positive, no doubt। and एक बात यहाँ पे समझो कि दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जब एक किसी वेक्टर का खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं p बार डॉट p बार इटसेल्फ, तो ये जो बनता है ये एक्चुअली उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर बनता है। ये बात हमको अच्छी तरह समझना है। कोई भी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट उसके खुद के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हुआ करता है, और यही बात यूज करके, ठीक है, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूले बनते हैं
वो भी आराम से प्रूव कर सकते हैं। पता है कैसे? देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर मैंने लिया कि सपोज आर बार, मॉड ऑफ आर बार, उसका स्क्वायर, उसको मैं ऐसा लिख सकते हैं ना, आर बार डॉट आर बार। ओके, आर बार डॉट आर बार. Suppose that this r bar is the sum of two vectors. Suppose r bar is going to be p bar plus q bar, right? So in that case, we can just replace this r bar by p bar plus q bar, and this r bar can also be replaced by p bar plus q bar as well. And then we can just get this as mod of r bar the whole square, which is going to be equal to p bar plus q bar dot p bar plus q bar. Just open this bracket, each term by each term मल्टीप्लाई करो फटाफट, ठीक है? तो चार टर्म्स हमको मिल जाएंगे। कौन से देखो, सबसे पहला मिलेगा p bar dot p bar, right? Plus here it will be p bar dot q bar, right? Plus here it will be q bar dot p bar, and finally it will be q bar dot q bar, right? So here mod of r bar square is kept as it is, where p bar dot p bar, according to this relationship, it will be actually mod of p bar square, right? So here it will be mod of p bar ka whole square plus this p bar dot q bar and p bar dot q bar just adds up together, and we are left with 2 times of p bar dot q bar, right? So here it is going to be p bar 2 times of p bar dot q bar. Okay, and here it is going to be mod of q bar whole square once again. And then we can just simplify this further and get this as mod of r bar whole square is going to be equal to, okay, one more thing is that mod of r bar के बदले क्या लिख सकते हैं? r bar r ही लिख सकते हैं कि नहीं सिंपली? तो ये बन गया हमारा r स्क्वायर. mod of p bar को क्या लिख सकते हैं? सिंपली p लिख सकते हैं, तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ p bar डॉट q bar. अभी अभी हमने देखा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एक्सप्रेस्ड एज mod of p bar into mod of q bar into cos theta. So you can write this 2 p bar dot q bar as 2 times of p q cos theta, right? And finally this mod of q bar can be replaced by q here, and hence we can get this as q square as it is, so that r can actually be written as root of p square plus 2 pq cos theta plus q square. And we have already proved this formula by another method. If you remember, r is equal to root of p square plus q square plus 2 pq cos theta. But this is a completely entirely different method to get that proof, to prove that formula actually. In the same way we can also do for the subtraction. So if subtraction s bar is going to be p bar minus q bar, then we can just take the self dot product on both sides, so that we get this s bar dot s bar is equal to p bar minus q bar dot p bar minus q bar, right? So that if we just expand this, then we get this mod of s bar का whole square, and here each term by each term अगर expand करेंगे तो first term में हमको मिलेगा mod of p bar the whole square minus second term में हमको मिलेगा minus 2 times of p bar dot q bar plus here it will be mod of q bar का whole square. And if we replace this mod of s bar the whole square as s only, तो mod of s bar को अगर s लिख देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा s का स्क्वायर, और यहाँ पे mod of p bar के बदले सिंपली p लिखना है हमको, तो वो बन जाएगा p स्क्वायर. और यहाँ पे फिर 2 टाइम्स ऑफ p bar डॉट q bar मतलब क्या? pq cos theta. So here it will be pq cos theta, and finally this mod of q bar will actually be replaced by q only, and hence we get this as a q square. And then we can just get this s is equal to root of p square plus q square minus 2 pq into cos theta. Okay, so this formula for subtraction can easily be found out by using this method, and this formula for addition can also be found out in this way by using this method. Remember. ठीक है, तो ये हमको मिलता है. Yes. And what is the unit vector? You should know. What is unit vector? Unit vector is a vector whose magnitude is 1. Yes.
the unit vector is going to be a vector whose magnitude is 1 unit in the same direction. Suppose ये p bar है, तो इस p bar के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं p cap, and this p cap actually will be found out by dividing this p bar by mod of p bar. Any vector divided by its own magnitude will give us the unit vector. Okay, so this is all about the dot product, and finally we can talk about the cross product now. So okay, before that we can also see the one more property of dot product, because where the dot product is used in physics is dot product is used to find out the work done. Work done is equal to force into displacement. Force और displacement का वो dot product हुआ करता है. Secondly, the power can be found out by taking the dot product of force and velocity vector. Remember. And also there are many examples in physics, but just these two are sufficient for you. Power is actually the scalar quantity, so we are not to express it as p bar, but it should be p only. Yes. So these are the expression for work done and power. Remember. And also, if suppose that p bar is expressed in terms of I bar, j bar, k bar as px I bar plus py j bar plus pz k bar, and q bar is expressed as qx I bar plus qy j bar plus qz k bar, then we can get this p bar dot q bar found out as px into qx plus py into qy plus pz into qz, right? Note that there is no I bar, j bar, k bar in the formula for p bar dot q bar, because p bar dot q bar is a scalar one. Okay, it's a number, and that's why it's called as scalar product or dot product. Remember, the dot product of these two vectors is always going to be a number. Remember, and that's why it is called as dot product or it's called as scalar product. Remember. Okay, and using this only, using the formula that p bar dot q bar is equal to mod of p bar into mod of q bar into cos theta. So using this formula, we can find out the angle between the two vectors like this. The angle between the two vectors can be written as p bar dot q bar upon mod of p bar into mod of q bar, right है, जिसको हम आगे चल के ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से. देखो, अगर इसको हमने ऐसा लिखा cos theta is equal to p bar dot q bar. What is the value of p bar dot q bar? See it here. This is the value of p bar dot q bar, right? So we can just replace it by that and get this px into qx plus here it is py into qy plus here it is pz into qz, right? And that is to be divided by mod of p bar. What is mod of p bar? We know that it is going to be root of px square plus py square plus pz square, right? And what about mod of q bar? So mod of q bar is similarly, we can get it as qx square plus qy square plus qz square, right? And this will be actually the formula for finding the angle between two vectors, any two vectors. तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो इसी फॉर्मूला से हमको मिलता है. रिमेंबर. चलो ठीक है. So these are the properties of dot product and the ways or techniques which are focused in the MCQs. तो MCQs के अंदर ये सारे टेक्निक्स फोकस किए जाते हैं. ठीक है. So let us see the properties of cross product of a vector, two vectors in the next lecture. तो कल के लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे और उसके ऊपर भी कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज होने के बाद थोड़ा हम ऐसा करेंगे, पूरा ओवरऑल वेक्टर्स के ऊपर के जो एमसीक्यूज है वो थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टाइप के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने के लिए आगे जाएंगे. ठीक है.
yes, चलो, thank you all of you.